Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are moving in right direction, and I am happy. Most of you are showing remarkable improvement over the period of time. Now we are focusing on IBPS clerk. This is about 1 month away from now. Those are also appearing for RRB. First they will focus on RRB. After RRB pre is over, and that they can devote time to IBPS clerk and main exam of RRB. But those are not appearing for RRB, they will follow this schedule, because this is the question asked number of times: should we follow IBPS clerk schedule or RRB schedule? If you are appearing in RRB, you will follow the RRB schedule. If you are not appearing in RRB, then you will follow the IBPS clerk schedule. So today you will attempt mock test number 13. So we will be attempting 15 mock of 2022 and 15 mocks of 2023. 22, 15 and 23, 15. So in all we will be covering 30 mock tests by we reach our exam date. Link of this mock test is available in description and comment column. Click the link, register, take annual plan along with topic test, along with sectional mock test, and apply coupon code AA03. You will have 10% off. You can buy these plans through Smart Kida app also. Download the app, pick these plans and apply coupon code AA03 to have 10% off. I am extremely happy that people, those are followed my advice. They have taken this mock test and they are showing the remarkable improvement. Topic test is playing the trick. Sectional mock test is helping, and full length mock test is helping you to analyze your performance. Now divide your time into 4 parts. 2 hours for English, 2 hours for quant, 2 hours for reasoning, and 2 hours for banking and current affairs. In 2 hours of English, you will be attempting topic test of English and sectional mock test of English. Topic test and sectional mock test are different things. Don't mix up. In quant hours, you will be doing topic test of quants and sectional mock test of quant. And reasoning, you will be attempting the topic test as well as sectional mock test of reasoning. Then in current affair, you will read the current affair. For current affair, I have suggested you a very good source. Link is there. Click the link. You will land up on the app. Download the app. Take 2023 plan. Apply coupon code AA03 to have 10% off. Now you are having access to daily, weekly and monthly PDF. Cover at least from 1st April. Why we should cover more than 6 months? There is already a video I have placed on the community as well as Telegram channel. Watch this video and understand. Then for banking, I have given you 3 playlists: banking, finance, economics, current affair or banking, finance, economics, and banking quiz. You must watch 10 to 15 videos per day. This is going to help you to gain banking knowledge, make the notes, make bullet points. This will help you in the main examination. Now you will understand what we are doing. We are doing topic test, sectional mock test, full length mock test. Topic test is a knowledge source for each topic. When we attempt a topic test, we learn the topic, we reach the perfection level in topic. That means ultimately our subject is going to be strong. Don't mix up sectional mock test with topic test. Some candidates, they are attempting the sectional mock test and feeling that they are attempting the topic test. No. Topic test is an additional tool, an excellent tool to gain knowledge. So don't ignore this tool. You have to acquire all the 3 tools. One is topic test, second is sectional mock test, third is mock test. And this combination will help you to improve. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS क्लर्क की हम तैयारी कर रहे हैं. अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मल्टीपल टाइम टेबल है, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें. पहली चीज़ हमें ये समझनी है, यदि मैं RRB का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अब वो 10-12 दिन दूर है, तो मुझे RRB का ही टाइम टेबल फॉलो करना है. उसमें मैंने आपको 10 दिन का टाइम टेबल भी दे दिया और डेली टाइम टेबल भी दे रहे हैं. अब आप में से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो RRB नहीं दे रहे, वो ऑलरेडी RRB में है या RRB नहीं देना चाहते, उनके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, कोई भी कारण हो सकते हैं, तो वो लोग IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं. उनके लिए ये टाइम टेबल है. कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें. डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से टाइम टेबल डाले जा रहे हैं.
तो IBPS क्लर्क टाइम टेबल उन कैंडिडेट के लिए है जो RRB अभी नहीं दे रहे बट IBPS क्लर्क दे रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 13 2022 वाला अटैम्प्ट करेंगे। ओवरऑल हमें 15 मॉक टेस्ट 2022 के अटैम्प्ट करने हैं और 15 ही हमने 2023 के अटैम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लेंगे, साथ में टॉपिक टेस्ट ले लेंगे, साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लेंगे। कूपन कोड लगाएंगे AA03 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तीनों चीज़ें सेलेक्ट करेंगे और कूपन कोड लेंगे AA03 10% ऑफ है। अब आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, देखा कुछ टॉपिक आपके अभी भी वीक हैं, उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इस पर काम करना है। कई कैंडिडेट कंफ्यूज हैं टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट के बीच। वो सेक्शनल मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है हमने टॉपिक टेस्ट कर लिया। नहीं, टॉपिक टेस्ट अलग चीज़ है, सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग चीज़ है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग चीज़ है। टॉपिक टेस्ट आपका एक ऐसा टूल है जो आपकी नॉलेज एक्वायर करने में मदद कर रहा है। वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको नॉलेज दे रहा है और जब आपकी हर टॉपिक में नॉलेज अच्छी हो जाएगी तो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा, सेक्शनल मॉक में आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। जब सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो नेचुरल है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो तीनों टूल को इस्तेमाल करना है। जिनके पास टॉपिक टेस्ट नहीं है या सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं है उनको एडिशनल प्लान लेना चाहिए इसके अंदर, ये उनको मदद करेगा। अब ये कुछ ही दिन बचे हैं, इसको फुल्ली यूटिलाइज करिए। अपने टाइम को 4 हिस्सों में बांटिए, 2 घंटे इंग्लिश के, 2 घंटे क्वांट के, 2 घंटे रीजनिंग के, 2 घंटे करंट अफेयर और बैंकिंग के। जो इंग्लिश के 2 घंटे हैं उसमें आपने टॉपिक टेस्ट इंग्लिश के करने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट करने हैं। जो 2 घंटे रीजनिंग के हैं उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग के करने हैं और टॉपिक टेस्ट करने हैं। और जो 2 घंटे क्वांट के हैं उसमें टॉपिक टेस्ट क्वांट के करने हैं और सेक्शनल मॉक टेस्ट क्वांट के करने हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर के लिए अच्छा सोर्स मैंने आपको बता दिया, लिंक दे दिया। उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करके 2023 का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03 10% ऑफ आ जाएगा। अब आपके पास डेली, वीकली, मंथली PDF आ गई। यहाँ 1 अप्रैल से आपको तैयारी करनी है। 6 महीने से अधिक क्यों पढ़ना है ये मैंने आपको वीडियो दी है, उसको देख लीजिए। कम्युनिटी में भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है। इससे आपको समझ आएगा कि हमें 6 महीने से अधिक क्यों करना है। फिर बैंकिंग की 3 प्लेलिस्ट दे दी हैं, बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स और बैंकिंग क्विज। यहाँ से 10-15 वीडियो रोज की देखिए, उसके बुलेट पॉइंट नोट करिए। ये बुलेट पॉइंट आपके मेन एग्जाम में काम आएंगे। जो लोग बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो ये तीनों प्लेलिस्ट देख लेंगे, बहुत शानदार नॉलेज बैंकिंग की हो जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई चैनल्स पे ये 5-6 हज़ार कॉस्ट कर सकती है आपको, बट यहाँ पर फ्री है, इसका फ़ायदा उठाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।